And I offer my respectful obeisances to all of you here today. तो आप सभी को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आदर से। You are all Vaishnavas आप सभी वैष्णव हैं and are very dear to Krishna. और कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। And you make the environment auspicious wherever you go. और जहाँ भी आप जाते हैं वातावरण पवित्र कर देते हैं। Because in the Srimad Bhagavatam it is said, Bhavad vida bhagavatas tirta bhuta swayam vibho tirta kurvanti tirtani swantak stena gadabrita. The Vaishnavas carry Krishna within their heart. भागवतम में कहा गया है कि वैष्णव कृष्ण को अपने हृदय में लेके जाता है। And even more importantly, they carry love for Krishna within their heart. उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कृष्ण का प्रेम हृदय में लेके जाता है। And therefore, every place the Vaishnavas go, they create a holy tirtha. तो जहाँ भी वैष्णव जाता है वो पवित्र तीर्थ निर्माण करता है। And the only work for Vaishnavas is to do para upakar, as that is to do good for others. वैष्णव का एक ही काम है कि दूसरों का उपकार करना, पर उपकार। Prahlad Maharaj says in his prayers to Lord Nrsingadev that for myself I have no worries. प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव को कहते हैं कि मेरे लिए मैं कोई चिंता नहीं करता। Because by the mercy of my spiritual master, I know about the process of hearing and chanting. क्योंकि मेरी गुरु की कृपा से मैं श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया जानता हूँ मैं। Those who are absorbed in the process of bhakti, especially Shravanam Kirtanam, जो भक्ति के श्रवण और कीर्तन में लगे हुए हैं, rise above all the miseries of the material world. भौतिक जगत के सारे दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। They're happy in any circumstance. किसी भी परिस्थिति में सुखी रहते हैं। But people in general are suffering. लेकिन सामान्य लोग दुख भोग रहे होते हैं। Prahlad Maharaj said, therefore, although I have no personal anxiety, I have anxiety for all of the people of the world who do not know about Krishna. इसीलिए प्रहलाद कहते हैं कि मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है, लेकिन दुनिया के लोगों के बारे में चिंता है जो कृष्ण को नहीं जानते हैं। So the work of the great acharyas in this world is to do good for others. तो महान आचार्य का काम यही है कि दूसरों का भला करना। And the great acharyas set up a system through which the most number of people can be helped. और आचार्य ऐसी एक पद्धति बना दे जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का मदद हो सके। As you know, Suta Goswami spoke to the sages at Naimisharanya. सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बोले थे, आपको मालूम है? They had gathered there for a seminar. वो एक सभा के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे। How long was the seminar supposed to be for? वो सभा कितनी देर चलती होगी आप कल्पना कीजिए। Before you answer, how long is today's seminar that we're meeting for आज today? का जो हमारा सभा है, वो कितना देर का चलेगा अभी? It's 2 o'clock now. अभी 2 बजे है। Till 3 o'clock. So we have today's seminar is about 1 hour. तो 3 बजे तक चलेगा, तो हमारा आज का जो सभा है वो 1 घंटे तक चलेगा। But how long was the seminar at Naimisaranya? लेकिन नैमिषारण्य का सभा कितना देर चलने वाला था? 1,000 years. 1000 वर्ष। Are you ready to stay here for 1,000 years? रहेंगे आप? इधर आकर रहेंगे यहाँ पर? Today 1 hour will be okay. आज 1 घंटा ठीक है, बाद में देखेंगे। But what was the topic at Naimisaranya? लेकिन नैमिषारण्य में क्या विषय था? The topic was, how do we do the highest good for people in general? विषय यही था कि सब लोगों का सबसे अच्छा भला हम क्या कर सकते हैं। They saw that in Kali Yuga people would suffer very much. देखा कि कलयुग में लोग बहुत दुख भोग रहे हैं। And they asked the question, how can we do the highest good for the people in general? तो प्रश्न पूछा लोगों का सबसे बड़ा भला हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? This is a good question. तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। Anyone who asks this question is looking for the right kind of work. जो भी व्यक्ति यह प्रश्न पूछ रहा है वो सबसे अच्छा सही काम ढूंढ रहा है। And fortunately, the great acharyas give us that kind of work. और भाग्य से महान आचार्यों ने वो काम हमको दिया है। The Srimad Bhagavatam says, Kurvanti Govatsapadam Bhavabdim. The acharyas set up a system so that they can cross over the ocean of material existence. तो आचार्य ऐसी पद्धति बनाते जिसमें वे भी खुद भी पार हो जाएंगे भौतिक अस्तित्व से, और And so that anyone who follows in their footsteps can also go back to Godhead. और जो भी उनका पालन करेगा उनके पदचिन्हों को वो भी पार हो जाएगा। One doesn't have to be a great acharya to go back to Godhead. महान आचार्य बनने की जरूरत नहीं भगवान धाम जाने के लिए अपने को, But one has to follow the great acharyas. लेकिन महान आचार्य का पालन करने की जरूरत है।
The Srimad Bhagavatam says, Bejare Muniyotagre Bhagavantam Adhoksajam Sattvam Vishudham Shemaya Kalpante Yenutaniha. And that is that previously all the great learned acharyas worshipped Lord Vishnu. They did this because they knew that he's beyond the modes of material nature. And by worshipping him, they could attain the highest benefit of life. Kalpante yenutaniha means that anyone who follows those great personalities is eligible for the exact same result. So for a few minutes, I'm going to show you some pictures. Who here likes to see pictures? Okay, everybody else cover your eyes. This is one of the topics from my book, and this chapter I wrote is called "The Pen is Mightier Than the Sword." So first of all, I'd like to tell you about some research that's been done recently. People in the publishing business want to know, how long will books be interesting to people of the world? Paper books like this. In other words, there's alternatives like e-books. So the research shows that paper books are as popular as ever. Right now, as of 2 days ago, e-books are going down a little bit and paper books are going up. Nothing wrong with e-books. But sometimes devotees ask, well, maybe these books will not be relevant in a couple of years. Can you move that so I can see it, please? Thank you. So I just wanted to point out that nowadays everything's pointing towards the book being around for a long time. Maybe switch it out. That one's not working. Just pull that out and put that in. Technical adjustment. Better. So publishers now predict that their sales will remain in print books for decades to come. Some say forever. Also, people all over the world, doesn't matter in China, Taiwan, in Europe, in America, in India, like books. Books have been part of human society for thousands of years. They hold the whole record of human experiences. So here's a statement that was made by a famous professor in New York. He said that the smallest bookstore still contains more ideas of worth than have been presented in the entire history of television.
पहले से जितना दिखाया उससे भी ज़्यादा वहाँ एक छोटे से ग्रंथालय में होता है. Whether that's true or not does not matter. ये बात सच है कि नहीं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. The point is that people have a bhav for books. They like the लेकिन books. कहने का मतलब ये है कि लोगों के हृदय में पुस्तकों के लिए भाव है, भाव. So what are books? तो पुस्तकें है क्या? These books are containers. ये पुस्तकें है ना वो पात्र जैसे होता है ना भांडा. And what's inside these containers? और ये पात्रों में है क्या? They're idea seeds. इसमें कल्पनाओं के बीज है. When the seeds go out into the world, जब ये बीज दुनिया में बाहर जाते हैं, they implant themselves in people's hearts and minds. तो लोगों के हृदयों में और मन में वो बोए जाते हैं बीज. Now, one thing I'd like to point out is that the living entities who live in this world are called Tatastha Shakti. इस दुनिया में जो भी जीवात्मा रहते हैं उनको तटस्था शक्ति ऐसा कहते हैं. Everyone say Tatastha Shakti. बोलिए सब लोग तटस्था शक्ति. Yes, what does that mean? इसका अर्थ क्या है? Who can say? कौन बोल सकता है? Huh? Not to take any side? Okay. हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो किसी का बाजू नहीं लेता है, तटस्था. Okay. Means like the beach described to Tastas, the beach is sometimes wet, sometimes dry. It's neither here nor there. समुद्र का तट है, कभी-कभी वो गीला होता है, कभी-कभी सूखा होता है, कभी पानी आता है, कभी जमीन में होता है. ऐसा. Sometimes we say Tatastha Shakti means that the living entity can be affected by the material or the spiritual energy, either place. कभी-कभी हम कहते हैं तटस्था का अर्थ यह है कि जीवात्मा कभी आध्यात्मिक शक्ति में आता है, तो कभी भौतिक शक्ति में आता है. But from the point of view of book distribution, I'd like to say Tatastha Shakti means open to suggestion. लेकिन ग्रंथ वितरण के दृष्टिकोण से मैं ये कहूँगा कि तटस्थ शक्ति का अर्थ है कि सुझाव के लिए खुला. समझ में आता है? सुझाव के लिए वो खुला है. सुझाव उसको कोई भी दे सकता है. Every living entity is open to suggestion. हर जीवात्मा को वो सुझाव के लिए खुला है. मतलब वो कोई ना कोई उसको सुझाव देगा तो वो उसको स्वीकार करेगा. Why do you think all over Mumbai people put out advertising boards? अभी बंबई में लोग विज्ञापन क्यों करते हैं? बताइए. They put up a big sign that says drink Coca-Cola. वो बड़ा बोर्ड पे लिखते हैं कि कोका-कोला पीजिए. And the sign says open up a bottle of happiness. और उसमें लिखा होता है आनंद की बोतल को खोलिए. Let me ask you a question. Is Coca-Cola a bottle of happiness? तो क्या कोका-कोला आनंद का बोतल है? Yes? Real happiness inside, right? असली सुख है ना अंदर है? Yes, it is. हाँ है. You get it. Happiness, you drink the Coca-Cola, right? कोका-कोला पी के तो देखो आप. Who wants a Coca-Cola now? किसको चाहिए कोका-कोला? People all over Mumbai, they're drinking Coca-Cola. लोग पी रहे कोका-कोला मुंबई में. They saw the sign. वो बोर्ड देखते हैं. And because they're Tatastha Shakti, और क्योंकि तटस्थ शक्ति है वे. they're open to suggestion. इसीलिए सुझाव के लिए खुले हैं. The sign says, open bottle of happiness. चिन्ह पे लिखा है आनंद का बोतल खोलिए. So the jiva says, yes, I must get Coca-Cola. तो जीव बोलता है हाँ मुझे कोका-कोला चाहिए मतलब चाहिए. And then all the cells in the body are saying, don't put that inside. लेकिन शरीर की सारी पेशियां बोलती है इसको अंदर मत डालो. But little jiva says, no, I saw it on the sign. I have to drink Coca-Cola. जीव बोलता है नहीं मैंने वो चिन्ह पे पढ़ा था वो आनंद का बोतल है मैं तो पीऊंगा. So everywhere, little jivas are being influenced by what they see in the material world. तो सर्वत्र जीव जो भी देखता है उससे प्रभावित होता है. Because they're very tiny. क्योंकि जीव जो है बहुत तुच्छ है. So, this is the power of suggestion that's brought forth through the written word. तो जो लिखे हुए शब्दों में जो सूचनाएं भरी होती है उनकी यह शक्ति है. Here's two pictures. One picture is of the modern print. Well, it's not so modern. This is entry-level printing press for तो the. यहाँ पे दो चित्र है. एक तो है दाहिने बाजू में प्रिंटिंग प्रेस जो छपाई खाना है. And पहले के ज़माने का उसका चित्र है. You see on the other side, we have these written scrolls. They're handwritten. और दाएं बाएं बाजू में लिखा हुआ कुछ पंजी है. These are scriptures written on palm leaves. ये पाम पत्र के ऊपर जो ताल पत्र होते हैं उसके ऊपर लिखे हुए कुछ अक्षर है. Rupa, Sanatan Goswami, they used to write on the palm leaf. रूप और सनातन गोस्वामी ताल पत्रों के ऊपर ही लिखते थे.
they have a stylus, a little metal object. They have to press it down on the palm leaf. वो कलम जैसा कुछ होता था, वो दबाएंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा, स्याही जैसा, वो उससे लिखेंगे. And later they put the palm leaf in the sun. बाद में वो तालपत्र सूर्य प्रकाश में रखेंगे. And then you get this imprint written on the palm leaf. You can. इसमें ये मुद्रण हो जाता है शाश्वत रूप से ऐसा. Later, people invented this printing press. बाद में लोगों ने छपाई खाना ढूंढ के निकाला. Now we have high-tech printing press. We can put out millions of books in a couple of days. अभी तो उच्च तंत्रज्ञान आया है तो एक दो दिन में बहुत सारी पुस्तकें छप जाती हैं. But it's the same thing. They're containers that hold these idea seeds. लेकिन बात तो एक ही, ये सब पात्र है, उसमें कल्पनाओं के बीज रखे हुए हैं. The first printing press was invented to print the Bible. पहला जो छपाई खाना था वो बाइबल छापने के लिए खोला गया था. And after Bibles started going around the world, many people became Christians. तो बाइबल जैसे दुनिया में फैलने लगा तो बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए. And we see that people have been influenced by various books. तो लोग जो है अलग-अलग ग्रंथों से प्रभावित होते हैं. Raise your hand if you have never heard of the theory of evolution. अगर आपने उत्क्रांतिवाद theory of evolution जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसके बारे में नहीं सुना होगा तो हाथ खड़ा कीजिए. मैंने नहीं सुना है. Okay. उत्क्रांतिवाद हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में evolution की theory ऐसा कहते हैं. Let's say that 99.9% of the people in this room have heard of evolution. Is that true? 99% लोगों ने सुना है. स्कूल में पढ़ा है ना आपने theory of evolution. डार्विन वाला. Do you know where it came from? वो कहाँ से आया? It came from this book. अरे ये पुस्तकों से ही आया ये. This book called Origin of the Species. उसमें पुस्तक का नाम था Origin of Species, मैंने योनियों का मूल. Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन ऐसा उसका नाम है. Who in this room, you've all heard of evolution, please raise your hand if you have this book. अगर ये पुस्तक आपके पास है तो हाथ खड़ा कीजिए. You must have it in your room somewhere. कहीं ना कहीं पड़ा होगा आपके यहाँ. है क्या? In your car. Maybe it's in your car. है कार में, मोटर कार में रखा हुआ. Did you leave it at home? आप घर में छोड़ा है क्या उसको? Do you have the book? पुस्तक है यह? Have you read the book? ये पुस्तक पढ़ा है आपने? How did you hear about evolution? उत्क्रांति के बारे में कैसे पता लगा आपको? Because books are containers. क्योंकि पुस्तकें एक पात्र जैसे हैं. Pushtake. This is a pushtake. So please say books are containers. Books are containers. Yes. And पुस्तकें पात्र जैसी है. pushtake patra kaise hai? वो भंडा होता है ना, वो भंडा जैसा पुस्तक होता है. Pushtake, pushtakam, pushtakani. पुस्तक is plural. Okay. Puस्तक is singular. Okay. Pushtake? It's plural. It's plural. पुस्तक is singular. Pushtake. Pushtake, pushtakam, pushtakani. Pushtake, pushtakam, pushtakani. Pushtakaya, pushtakat, pushtakashta, pushtake. संस्कृति विभक्ति है. All right, so this now is an ideology that is accepted all over the world. People accept evolution. तो यह जो उत्क्रांति की संकल्पना है उसका स्वीकार पूरे जगत में हो चुका है. And it came from a book. और ये कैसे शुरू हुआ? पुस्तक से शुरू हुआ. Then we have many economic systems in the world, like capitalism. जैसे दुनिया में बहुत सारा अर्थ क्रांति वाला संकल्पना है, जैसे कैपिटलिज्म यानी उद्योग पूंजीवाद. Came from a book, Pushtake. पुस्तक से आया, पुस्तक. How about revolutions? जो क्रांति होती है, क्रांति started by books. वो पुस्तक से ही शुरू हुई. You know Cuba. क्यूबा नाम का एक देश है. Fidel Castro was a revolutionary. वहाँ पे कोई क्रांतिकारी था. While he was in prison, he wrote down his ideas on paper. जब वो कारागार में था तो उसने कागज पर अपनी कल्पनाएं लिखी. But he wrote them with lime juice instead of ink. तो स्याही के बदले में नींबू का जूस, नींबू का रस से उसने लिखा. Because it's invisible. क्योंकि वो दिखाई ना दे किसी को इसलिए. Until you put it in the sun. और बाद में सूर्य प्रकाश में जब उसको रखा तो वो दिखने लगा. His wife used to visit him in the jail, and he would give her one piece at a time. She'd say, smuggle it out from the jail. तो उसकी पत्नी जेल में आती थी और वो नींबू के रस से लिखा हुआ कागज उसके हाथ में देता था वो, और बाद में बाहर लेके स्मगल करती थी उसको. And she made a book called History Will Absolve Me. तो उसी कागजों से उन्होंने वो पुस्तक बनाया, History Will Absolve Me, यानी इतिहास मुझे निगल लेगा.
And practically everybody in Cuba read that book. और क्यूबा ने तो हर एक व्यक्ति ने ये पुस्तक पढ़ा क्यूबा में. And then there was a revolution. और फिर वो पुस्तक से बहुत बड़ी क्रांति हुई. And then in America, फिर अमेरिका में भी वैसा ही हुआ. how long ago was the American Revolution? अमेरिकन राज्य क्रांति कितना साल पहले हुई थी? इतिहासकार बोलिए. Approximately. Over 200 years ago. 200 साल पहले हुई थी. It started with a book. वो भी पुस्तक से शुरू हुई. All historians agree that this book caused the American Revolution. सारे इतिहासकार मानते हैं कि इसी पुस्तक से अमेरिकन राज्य क्रांति हुई थी. It was written by a man named Thomas Paine. वो थॉमस पेन नाम के व्यक्ति ने वो पुस्तक लिखी थी. The book's called Common Sense. उसका पुस्तक का नाम है कॉमन सेंस है जो बुद्धि. It was the per capita the best-selling book of all time in the history of the world. और सबसे ज़्यादा बिकी हुई पुस्तक इतिहास में यही है दुनिया के इतिहास में. Per capita. And because of this book, people rose up and they had the American Revolution. So these containers that hold these idea seeds affect people in very deep ways all over the world. Why is that? Because the jiva is open to suggestion. That's correct. So we are in a sampradaya. And a sampradaya means to give gifts. It means to give the greatest gift. We're giving the idea seeds that come directly from the spiritual world. They come from Krishna. Look also, do you know Chaitanya Mahaprabhu? He founded Sri Brahma Samhita in the Adi Keshava temple in South India. He had it copied by hand many times so he could give it to his favorite disciples. Practically, it's a miracle that we have that book available. He also gave the Krishna Karnamrita. Now look at this picture. I want you to see if you can see anything unusual. This is Lord Brahma at the beginning of creation. Please tell me what's unusual about this picture if it's at the beginning of creation. Yes, Prabhu, what is your name? What is it? Vijay Madhava Prabhu is going to tell us. There's a book in his hand. What's wrong with that? Beginning of creation, there were no printing presses, right? So why in all the pictures of Brahma do we have this picture of a book in his hand? Because this symbolizes our work, our family business that we do. Sampradaya means to give a gift. And this is the gift that we give. Now, I want you to help me out for a minute. Can you all help me for a minute? Okay. I need some feedback from you, from the audience. But I need a lot of feedback. Are you ready? Is everyone awake? Okay. I'm going to ask some questions and you have to answer. There's going to be a very simple answer, but you have to say it very enthusiastically, okay? Okay, ready? Who's this? What is he writing? I'll give you a clue. It's a one-word answer.
Books. Everyone say books. पुस्तक लिख रहे हैं. Now see, the thing about the word book is you can say it really loud. बुक शब्द ऐसा है कि वो जोर से भी बोल सकते हैं. बुक. That's not really loud. वो जोर से नहीं था. That's very soft, actually. We'd like to scare the people downstairs, okay? लोगों को डराने का है नीचे. What is Vyasadeva writing? Correct. Okay, who is this? यही कौन है? What is Madhvacharya holding in his hand? उनके हाथ में क्या है? Correct. सही. Who is this? ये कौन है? What is he writing? क्या लिख रहे हैं? Correct. Who is this? ये कौन है? What is he writing? Correct. Who is this? What are they writing? Correct. Who is this? What is he posing with? Correct. Who is this? What is he posing with? Correct. And who is this? And what is he posing with? 100%. Very good. 100%. Now you know the secret of our sampradaya. हमारे संप्रदाय का रहस्य आपको पता चल गया अभी. We are called the sampradaya of the book. हम पुस्तकों का संप्रदाय हैं. That's why Lord Brahma is depicted holding a book in his hand. इसलिए ब्रह्मा जी को पुस्तक हाथ में लेके दिखाया गया है. Maya mukta jivana nahi swata Krishna gyan. Kripaya Krishna Veda Puran says in the Sri Chaitanya Charitamrita that people don't automatically come out of Maya. चेतन चेतना में लिखा गया है कि लोग अपने आप माया से बाहर नहीं आते. Jivera Kripaya Koila Krishna Veda Puran. Therefore, Krishna Dvaipanavyas has compiled the Srimad Bhagavatam specifically to bring people out of Maya. इसीलिए व्यासदेव ने भागवतम इसीलिए लिखा है कि लोगों को माया से बाहर निकालने का है. Anartho pasanam sakshad bhakti yoga madhok sajay lokasya ajanato vidvams chakre satvata samhitam. He could see that people in general had missed the opportunity of life. Therefore, he wrote the Srimad Bhagavatam. उनको ये दिखाई दिया कि लोगों का जीवन का अवसर चला गया है, इसीलिए उन्होंने भागवतम लिखा. So, we have now temples all over the world. This is a picture of the Krishna Balaram Mandir in Vrindavan, 1975, when it opened. And all these people from all over the world gathered there in 1975 to inaugurate the opening. Where did they come from? They came from Srila Prabhupada's pen. Pen. Yeah. So Prabhupada had started a transcendental business to make books available to people all over the world in many different languages, so that by reading them they would come to full knowledge. So this work is now available to everyone in the world. And we have the most beautiful books available for everyone to read and distribute. So all of you are famous for book distribution. And this work is the most important work that you can do. And by distribution of books in mass quantity, the ideas from the spiritual world will be implanted in human society.
तो अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करने से आध्यात्मिक जगत की कल्पनाएं मानव समाज में प्रतिबिंबित होंगी. As Navina Nirada Prabhu mentioned yesterday, we were in Pune. जैसा कल अभी नवीन नीरज प्रभु ने बताया कि कल हम पुणे में थे. And we went out to the streets to meet people and show them Prabhupada's books. तो हम रास्ते पे गए लोगों से मिलने के लिए और उनको पुस्तकें दिखाने के लिए प्रभुपाद की पुस्तकें. And by showing them to many different kinds of people, we could understand that the external covering is not important, it's the soul within. तो पुस्तकें लोगों को दिखाने के बाद समझ में आया कि जो बाहर का वेश है, आवरण है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर का आत्मा महत्वपूर्ण है. We met many Muslim people. हम बहुत सारे मुसलमान लोगों से भी मिले. And when we explained the importance of these books, और जब हमने इन पुस्तकों का महत्व उनको बताया, they purchased the books. तो उन्होंने पुस्तकें खरीद ली. We met some people who are homeless. कुछ बेघर लोग थे, उनसे हम मिले. And they could understand the importance of the books. उनको भी पुस्तकों का महत्व समझ में आया. And they even gave donations. और उन्होंने भी दान दिया. These books are transcendental. ये पुस्तकें दिव्य है. So the perfect balance in life is to read the books very carefully तो जीवन में अच्छा संतुलन यही है कि पुस्तकों को सावधानी से पढ़ें and to distribute them to others. और दूसरों को वितरित करें. In America, about 6 years ago, we started a system called the Monthly Sankirtan Festival. तो अमेरिका में 6 साल पहले हमने मंथली संकीर्तन फेस्टिवल यानी मासिक संकीर्तन उत्सव हमने शुरू किया. We started at our temple, which was very small at the time. हमने मंदिर में शुरू किया. हमारा मंदिर बहुत छोटा था उस समय. And we made a plan that once a month, everybody in the community would come together to go out on book distribution. हमने योजना बनाई कि महीने में एक बार समुदाय के समाज के सब लोग एकत्र आएंगे और ग्रंथ वितरण पर बाहर जाएंगे. We would work as one team. हमने एक दल के रूप में काम किया. And we would emphasize teamwork. और हमने दल का कार्य के ऊपर बहुत जोर दिया. And our principle is that a lot of devotees, each doing a little bit, is very strong. हमारा कल्पना यही है कि बहुत सारे भक्त होंगे और हर एक भक्त अगर थोड़ा-थोड़ा भी करेगा तो भी बहुत बड़ा काम होगा. And children can come too. Children. और बच्चे भी उसमें भाग ले सकते हैं. And now we have about 70 children who are going out for book distribution. हमारे दल में 70 बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं ग्रंथ वितरण पर. They go with their parents. माता-पिता के साथ जाते हैं. And they say it's the nicest time they have together, the parents and the children going on book distribution. और माता-पिता के लिए और बच्चों के लिए सबसे अच्छा समय वही रहता है कि वो साथ में रह सकते हैं दोनों एक साथ. Sometimes parents want their child to get an MBA. कभी-कभी माता-पिता लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा MBA बनना चाहिए. But when children learn how to distribute books, it's better than an MBA. एक बच्चा अगर सीखेगा पुस्तक कैसे बांटना तो MBA से भी ज़्यादा बड़ा वो बनेगा. Sometimes people get some degree in college, but then they don't know how to work in the world. कभी-कभी लोगों को डिग्री भी मिलती है कॉलेज में, लेकिन उनको मालूम नहीं कैसा उसको उपयोग करना है. But when kids learn how to distribute books, they learn everything about the world. अगर बच्चे लोग सीखेंगे पुस्तकें कैसे बांटनी है तो दुनिया के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे बच्चे. They learn how to communicate to people. लोगों से बात कैसे करना है वो भी वो सीखेंगे. They also learn how to face rejection. और अगर लोग ना बोलेंगे तो कैसा हमको मन रखना चाहिए वो भी सीखेंगे. They learn the power of organization, how important it is to organize. और ये जो चलाने का कैसे कोई भी बड़ा काम कैसे करना है वो भी सीखते हैं. But most importantly, they develop compassion. ये सबसे ज़्यादा उनमें क्या आता है? करुणा, दया उनमें आती है. And we have many householders who come out for book distribution. और बहुत सारे गृहस्थ लोग भी हैं जो ग्रंथ वितरण के लिए बाहर आते हैं. Everyone together working as a team. हर व्यक्ति सब लोग एक साथ मिलकर एक दल के रूप में काम करना. And in America, over the last 5 years, North America, that's America and Canada, using the same system, we've increased book distribution collectively over 200%. तो पिछले 5 साल में अमेरिका में, उत्तर अमेरिका और कनाडा में हमने 200% वो बढ़ा दिया, मतलब डबल दुगना कर दिया इस पद्धति का पालन करके. So I can see here in India that the real power is in the congregation. तो मैं भारत में यह बात देख रहा हूँ कि असली जो शक्ति है वो एक साथ होने में है. When many people come together and work as a team, it has great power. जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और दल के रूप में काम करते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति उसमें होती है. But to do such a thing, one needs a cause, a common cause that everyone can agree on. लेकिन यह बात करने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए जिसके वजह से लोग एक साथ आएंगे.
Practically in ISKCON, book distribution is that cause that everyone agrees with. और ISKCON में ग्रंथ वितरण ऐसा विषय है कि सब लोग इसको मानते हैं कि हाँ ये करना चाहिए. Because this was the main focus that Prabhupada gave before he came to America and after he arrived. क्योंकि प्रभुपाद ने यही एक काम सबसे ज़्यादा बोला है अमेरिका में जाने से पहले और बाद में भी. In fact, Prabhupada, while he was alone in India, spent time writing and printing and distributing his own books. जब प्रभुपाद अकेले भी थे भारत में उस समय भी वे अपना समय इसी में लगाते थे लिखना, प्रकाशित करना, वितरित करना. Did you know that his books arrived in America before he did? क्या ये बात आपको मालूम है कि उनकी पुस्तकें उनके पहले अमेरिका में पहुंच चुकी थी? Brahmananda Prabhu was telling me just before he left this world ब्रह्मानंद प्रभु मुझे बता रहे थे ब्रह्मानंद प्रभु अभी भी दुनिया को छोड़ के चले गए. that Prabhupada had sold 16 sets of his first canto Bhagavatam प्रभुपाद ने उनके प्रथम स्कंद भागवत के 16 जो सेट थे वो to the Library of Congress in New Delhi. नई दिल्ली में जो कांग्रेस की लाइब्रेरी है उसको उन्होंने दिया ये सेट भागवतम से. And the Library of Congress had then sent those sets of books to various places around the world. तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ये सारे पुस्तक के सेट जो है भागवतम वो अलग-अलग भागों में दुनिया में भेज दिए थे. One of those places was the New York Public Library. उसमें से एक जगह था न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो न्यूयॉर्क का जो ग्रंथालय है वो. So Prabhupada's Bhagavatam arrived at the New York Public Library 1 year before he came. तो प्रभुपाद अमेरिका में गए उससे एक साल पहले उनका भागवत वहां पर पहुंच चुका था. And Brahmananda told me that when Prabhupada was alone in America, his main entertainment was to take a bus to go up to the library and visit his books. तो ब्रह्मानंद मुझे बता रहे थे कि प्रभुपाद जब अमेरिका में अकेले थे तो उनका एक ही काम होता था कि बस लेके वो लाइब्रेरी में जाना और वहां पे जाना ऐसा. So I just want to encourage everybody मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं to read Srila Prabhupada's books very deeply. कि आप गहराई से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करें. We have an international organization. हम अंतरराष्ट्रीय संस्था है. It's secret though. लेकिन यह गुप्त है अभी भी. Can I tell you a secret? एक गुप्त बात मैं आपको बता सकता हूं क्या? You won't tell anybody, right? किसी को बताने का नहीं है. We have an organization called CHAD, C-H-A-D, CHAD. हमारा एक चैट नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है. It means chapter a day. यानी हर दिन एक चैप्टर यानी हर दिन एक अध्याय. And the only qualification to join CHAD और चैट को में भर्ती होने की एकमात्र योग्यता यही है is that you agree to chant the verses in at least one chapter of Bhagavad Gita every day. कि आप कम से कम भगवत गीता के एक अध्याय में से श्लोक बोलने के लिए राजी हो के पास. You can do just the Sanskrit or just the Hindi or the English verses if you like. आप केवल चाहिए तो केवल श्लोक भी बोल सकते हैं. अगर आपको केवल अनुवाद बोलना है तो केवल अनुवाद भी बोल सकते हैं हिंदी में अंग्रेजी में. But you have to do at least one chapter a day. लेकिन दिन में कम से कम एक अध्याय पूरा करना है. It takes an average of 7 minutes. तो एक अध्याय के लिए 7 मिनट लगते हैं. अगर श्लोक में केवल बोलेंगे अनुवाद केवल बोलेंगे तो. Here in India, how many hours do you get in one day? भारत में दिन में कितना घंटा मिलता है? Approximately, how many hours do you कितना get? घंटा मिलता है? Huh? Who said? How many? What is your name? Suchi? Zui. Jui says 24. Is that correct? जूही कहती है 24 घंटे मिलते हैं. Do you all get 24 hours in a day? Yes? हाँ या ना? Someone said no. तो ना बोलना है. Okay. Everyone gets the same 24 hours. सभी को उतने ही 24 घंटे मिलते हैं. So if you invest 7 minutes a day in reading one chapter of Bhagavad Gita, तो अगर आप 7 मिनट देंगे दिन के एक अध्याय पढ़ने के लिए भगवद गीता का, you bring the great potency of Lord Krishna's words into your life. तो भगवान कृष्ण की महान शक्ति आप अपने जीवन में उतार रहे हैं. One thing always bothers me is whenever I show Bhagavad Gita, many times people say, "Oh yes, I know Bhagavad Gita." तो एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है कि जब भी मैं लोगों को भगवद गीता दिखाता हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ हमको मालूम है भगवद गीता. Or they say, "Oh, I have Bhagavad तो Gita." बोलते हैं हमारे पास है.
And I like to say, yes, but do you read Bhagavad Gita? लेकिन पढ़ो पढ़ो तुम भगवत गीता. So at least in ISKCON, कम से कम ISKCON में we should read at least one chapter of Bhagavad Gita a day. भगवत गीता का एक अध्याय तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए. Prabhupada said it many times. He asked us to read at least one chapter a day. भगवान ने बहुत बार बोला है कि एक अध्याय पढ़ो आप हर दिन. Who wants to join Chad? चैट में कौन आ? Yay! Okay, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Raise your hand if you want to join Chad. It means you agree to chant one chapter of Bhagavad Gita every day. यानी हाथ खड़ा कर रहे मतलब गीता. When I say 3, raise your hand. 1, 2, 3. चैट में आने के बाद वो करना पड़ेगा. There you go. Okay. So, we have a lot of new Chad members here. Let's give them a warm congratulations. ताली हो जाएगी. Little more. चैट में आए हुए मेरे लोगों का स्वागत है. Yes, you can all expect very good things in your life. तो आपके जीवन में बहुत अच्छी बातें होने की अपेक्षा कर सकते हैं. And one other point is that the Srimad Bhagavatam is 18,000 verses, correct? श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं. If you look at it on the shelf, it looks very intimidating, like it's too many books to read, अगर वो एक साथ रखेंगे तो देख के डर लगता है इतना सारा पढ़ने का है. right? Does it look like it's too much? बहुत ज़्यादा लगता है ना. Little much, right? थोड़ा ज़्यादा लगता है. Okay, let me help you. ठीक है मैं मदद करता हूँ. If you divide any big task into small parts, it makes it easy. अगर कोई भी बड़ा काम करने का होगा तो उसको छोटे-छोटे भागों में बांटेंगे तो आसान बन जाता है. So we've recently made an application that will be released in another 2 weeks. अभी हमने एक ऐप बनाया. वो अभी 2-3 दिन में हफ्ते में आएगा. ऐप होगा ना, ऐप वो एंड्रॉइड में होगा हफ्ते में. And it shows all of Srila Prabhupada's books. उसमें प्रभुपाद की सारी पुस्तकें दिखाई जाएगी. And it tells you how many pages each book has. और हर पुस्तक में कितने पन्ने हैं वो आपको बोलेगा. Then you can choose how quickly you would like to read that book. फिर आप चुन सकते हैं कि मुझे ये पुस्तक है कितनी देर में पढ़ने का है. And then it tells you how many pages a day you have to read to फिर वो finish. आपको गणना करेगा, तुरंत बता देगा कि आपको हर दिन इतना पढ़ना पड़ेगा तो आपका ये पूरा होगा. For example, if you want to finish the Bhagavatam in 5 years, मान लीजिए आपको भागवतम 5 साल में पूरा पढ़ने का है. how many pages do you think you have to read each तो day? आपको हर दिन कितना पन्ना पढ़ना पड़ेगा? क्या लगता है आपको कितना लगता है? Don't say if you know, but tell me what you think. How many pages do you think? हमें तो मत बताइए लेकिन आप सोच के बोलिए. Yes, Prabhu? He said 36. ये 36 पन्ना बोल रहे हैं. Incorrect. सही उत्तर नहीं है वैसे, थोड़ा नजदीक है. Yes, Prabhu. 4? 3 pages. Incorrect. गलत है. 3 पन्ना नहीं. 8 pages a day. 8 पन्ना. 8. If you read 8 pages of Srimad Bhagavatam every day, you'll finish all 12 cantos in 5 years. अगर 8 पन्ना भागवतम का हर दिन पढ़ेंगे तो 5 साल में पूरा भागवतम पढ़ के पूरा हो जाएगा. It'll take you only a couple of minutes a day. और वो 8 पन्ना पढ़ने के लिए कुछ मिनट ही लगते हैं हर दिन. But what if you want to do it faster? लेकिन और तेजी से अगर पढ़ना है मान लीजिए. What if you want to finish the whole Bhagavatam in 1 year? मान लीजिए 1 साल में पूरा पढ़ना है भागवतम. Who here would like to finish the Bhagavatam in 1 year? Raise your hand. 1 साल में कौन पढ़ना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए. Everybody raise your hand. सबको बात करा दीजिए. No, really. Everyone raise your hand. I didn't say you have to do it. I just said who would like to. Raise your hand. करो है ना नहीं बोला खाली हाथ. Put both hands up. Both hands. Yeah. कौन चाहेगा इतना ही पूछा है. That's good. Because enthusiasm to hear about Krishna is directly correlated to how advanced you are in Krishna consciousness. क्योंकि कृष्ण भावना के लिए जो उत्साह है वो सीधा कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ है. So to finish the whole Bhagavatam in just 1 year, all you have to do is read 41 pages a day. तो अगर 1 साल में पढ़ना है तो 41 पन्ना रोज पढ़ना पड़ेगा. 41 1 साल में पढ़ने के लिए पूरा भागवत. 41 pages. 41 पन्ना हर रोज पढ़ना पड़ेगा. Now I wanted to teach you a mantra. अभी एक मंत्र सिखाता हूँ आपको. Okay, you watch me and then you repeat, okay? आप मुझे देखिए फिर दोहराइए. It's easy. It's easy. Okay, so ये बहुत सहज है. I'll say all you have to do is read 41 pages of Bhagavatam every day, तो अगर 41 पन्ना पढ़ना है हर दिन तो and then you say the mantra. फिर आप मंत्र बोलिए. It's easy. Easy. Okay, बहुत so सरल है. all you have to do is read 41 pages of Srimad Bhagavatam
every day to finish in 1 year? Good. A little more enthusiasm, though. All you have to do is read 41 pages of Bhagavatam a day to finish in 1 year. Correct. So now you go out from this class, and when you meet your friends, you tell them, all you have to read is 41 pages a day to finish the Bhagavatam in 1 year. And they might go, and then you go like this. It's easy. Very good. Yeah. So the point is, we only have a certain number of breaths. We only have a certain number of seconds left in this life. Invest in reading Bhagavad Gita every day. Be on a real schedule how to finish Bhagavatam. And then take some time, at least once a month, to come together as one team. So that you can go out and distribute it to other people. So already here in Mumbai, we have a team that's forming, right? Would you say a few words about the team? Hare Krishna. So what we do is once a month we go out on book distribution. तो हम क्या करते हैं महीने में एक बार हम ग्रंथ वितरण के लिए बाहर जाते हैं. And it's actually inspired by His Grace Vaisesika Prabhu. ये वैशिष्टिका प्रभु ने हमको प्रेरणा दिया है. As he said, once a month. ऐसा उन्होंने कहा महीने में एक बार. So we started small with just 2-3 devotees. तो हमने छोटे स्तर पे शुरू किया 2-3 भक्तों के साथ. And now we have about 20-25 devotees who come every month. तो अभी महीने में हमारे साथ हर महीने में 20-25 लोग आते हैं. So actually we are going in 1.5 hours today for 4 to 6 p.m. for book distribution. तो अभी आज हम 4 से 6 बजे तक ग्रंथ वितरण के लिए 1.5 घंटे के लिए जाने वाले हैं. To Lokhandwala, and those who are willing to come, you can join us. लोखंडवाला में जाने वाले और जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं हमारे साथ. Also you can form small groups and try and do the same in your area. तो आपके इलाके में भी आप अपना समुदाय बना सकते हो, अपने इलाके में प्रयास कर सकते हैं. Now what do you say? Yeah, it's easy. It's easy. The only hard part is walking out the door. Because the mind says, why don't you stay home? But now I'll teach you a great secret about advancing in spiritual life. If you learn to be comfortable when you're outside your comfort zone, and to feel uncomfortable when you're in your comfort zone, then you're on the edge where you can make advancement in spiritual life. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that you nourish your spiritual body with spiritual blood. The spiritual body is called Chid Sharira. And spiritual blood is called Chidrakta. And he said that you nourish the Chid Sharira by going out to preach. And when you're misunderstood by the people you meet, or they neglect you, then that's when you get spiritual blood. If you stay home, you become anemic. Those who go out get very strong spiritual blood.
So we'd like to call for a revolution here in Mumbai. तो यहाँ पर क्रांति निर्माण करना चाहते हैं मुंबई में। The power is in this room. शक्ति इसी कमरे में है। It's the women and children. स्त्रियां हैं और बच्चे It's हैं। the householders. गृहस्थ लोग बैठे It's हुए हैं। those who live in the congregation, who work, जो काम करने वाले जो सब लोग हैं। but who come together as a team at least once a month. एक साथ एक दल के रूप में कम से कम महीने में एक बार आना। And they go out to give Srila Prabhupada's books to the people of Mumbai. और प्रभुपाद की पुस्तकों को देने के लिए बम्बई के लोगों को जाना। And by that, we've advanced in spiritual life. वो करने से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। And we'll bring thousands of people to Krishna और consciousness. हजारों लोगों को कृष्ण भावना में लेके आते हैं। Tens of thousands दसों हजारों लोगों and millions. और करोड़ों लोगों। And now I'll take a few reflections. That means anything that you heard that stuck in your mind from today's discussion. तो आपके मन में कुछ सवाल अटका होगा तो आप अभी पूछ सकते हैं। A reflection isn't a question. It's just one thing that you heard that you thought was worthy that you can take with you. Prabhu, what's your name? Okay, pass him the mic. तो I'd like to thank our translator. What is your name? Raghav. I'd like to thank Raghav Prabhu for translation today. Please give him a hand. A little more. Come on. More. अभी वैसे प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना अच्छा आपको बताया। Raghav is a great translator. You are a great Say. Okay, Prabhu, please tell us. Hare Krishna Prabhuji, what do you say to Muslim people when you meet them? Because generally they don't. I tell you what I say. I say Salam Alaikum. Alaikum Salam. हाँ मुसलमान लोग लगे तो बोलो Alhamdulillah. Allahu Akbar. Because in language, if you know a few words, like if you meet somebody from China, you say ni hao. Everyone say ni hao. Ni hao. Yeah. If you meet somebody from Japan, you say konnichiwa. If you just say one word in somebody's language, then they say hey. So you just know a little language. So yesterday I met one man. I told him Salam Alaikum, and I showed him the book, and I told him that the main purpose of life is to develop love for Allah. तो एक व्यक्ति से कल मिला, उसको सलाम वालेकुम बोला और मैंने उसको बोला कि जीवन में सबसे बड़ा काम अल्लाह से प्रेम करना है। He said, he looked at the book, he said, but I'm a Muslim. वो बोला मैं तो मुसलमान हूँ। And I said, if we have more people like you in the world, it would be a better place to live. तो मैंने कहा कि दुनिया में तुम्हारे ऐसे और ज़्यादा ऐसे लोग होंगे तो दुनिया बहुत बड़ी अच्छी बन जाएगी। I said, it's people of faith that are actually keeping the world afloat. क्योंकि लोगों की श्रद्धा ही दुनिया को चलाती है। And I told him this book is meant to develop love for Allah. और ये पुस्तक जो है अल्लाह के लिए प्यार विकसित करने के लिए है, ऐसा मैंने उसको बोला। But now people all over the world, they're distracted by material things. लेकिन भौतिक शक्तियों से चीजों से लोग अभी आकर्षित हो रहे हैं पूरी दुनिया में। They don't know what to do. उनको मालूम नहीं क्या करना है। And therefore, we're working to help bring people to this love for Allah. इसीलिए हम लोगों को अल्लाह का प्रेम देने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने उसको बोला। We didn't just meet one Muslim person, we met about 3, and they all took books yesterday. केवल एक से नहीं, तीन मुसलमान लोगों से कल बात किया। What else? सबने पुस्तक लिया। Reflections, other reflections. Anything you heard और कोई विचारधारा that stuck in your mind? जो Yes, आपके मन में होगी। Prabhu. Right over there. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, one thing that I would like to highlight, which I think is a big takeaway for me, and that's the photograph that you showed for all the Maharaj in our and they were posing with books or holding books, and that's a new perspective about books and the criticality of that. And I think that's something which I never noticed, and that's something I should definitely take away, which
which gives and highlights how critical books are. तो इन्होंने ये टिप्पणी की है कि आपने जो इतनी अच्छी तरह से सभी आचार्यों को दिखाया, पुस्तकों को हाथ में दिखाकर उनके, तो ये बहुत बड़ी नई बात आज हमने सीखी और पहले हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, तो आपने नया हमको दृष्टिकोण दिया. Okay, a few more. From the Vaishnavi side, reflect. One thing you heard that stuck in your mind. जो एक चीज आपने सुनी होगी जो आपके मन में अटक गई होगी. हरे कृष्णा. Thank you. धन्यवाद. Okay. He is on the Mataji side practically, so. Hare Krishna. भगवत गीता के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मैं पढ़ता था, उनको बहुत गुस्सा आया था. मैंने बोला आप क्रोध मत होइए, आप क्रोध को एकदम खा जाइए, आप क्रोध मत होइए. उसको बोला मैं एक दिन श्लोक पढ़ा, बोल के बताया उनको हिंदी में. उन्होंने नेक्स्ट टाइम ये जो सर्कल में आके इंग्लिश में भगवत गीता लेके उन्होंने पढ़ के लोगों को आप पढ़ने को बोला. तो ही मेड विद द सिस्टम. He was very angry with me. So I just told him, he said, I just told that Christian fellow that don't become angry, you drink your anger. And then he came one day and he took Bhagavad Gita from here. Thank you. Reflect. Yes. Mataji right here. Raise your hand. Okay. So book signing well? Okay. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. The thing that struck me today was that Srila Prabhupada's book reached US before he reached US. Yes. That was तो हमको ये माता जी कह रहे हैं कि मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगी आज के प्रवचन में कि प्रभुपाद की पुस्तकें प्रभुपाद के पहले अमेरिका पहुंच चुकी थी. ये बात हमको बहुत अच्छी लगी. Thank you very much. Okay, so did you have a point? Yes, please go ahead. The thing that struck me today was that it is really hard to get out of the door to go for the book distribution and it is to distribute the books. तो Yes. माता जी को जो बात अच्छी लगी वो ये है कि ग्रंथ वितरण करने से भी ज्यादा ग्रंथ वितरण करने के लिए घर से बाहर कदम रखना ये सबसे ज्यादा कठिन बात है. ये उन्होंने वाक्य दिमाग में अपने रखा है. But one thing is, if you go with all your friends, if everyone goes at the same time, you get pulled along. लेकिन एक बात है कि अगर एक साथ अगर जाएंगे और सब लोग एक ही समय पे बाहर निकलने वाले होंगे तो आपको भी शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है. If it's only yourself, your mind can be very powerful, but if you go with whole group, it becomes easy. अगर आप केवल अकेले होंगे तो आपका मन आपके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर आप एक साथ होंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता. Now, I've received a message that we have to stop by 3 o'clock, so we only have 4 minutes. So, 4 मिनट केवल बाकी है. what? The question, yes. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Sometimes the people, they see the books, they take it in their hand and then they just reject it. So what can you do to tell them to take the book? क्योंकि लोगों के हाथ में पुस्तक देते हैं, सीधा नाम बोल देते हैं. क्यों ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? You can tell them that it will bring them good fortune. आप बोल सकते हैं कि आप ये इस पुस्तक से आपको बहुत अच्छा भाग्य मिलने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं. We met many people yesterday. When we showed them the book, at first they rejected it. कल हम ऐसे बहुत लोगों से मिले जो पहली बार जब उनको पुस्तक दिखाया तो पहले ना ही बोला उन्होंने. So we take the book back and we give them a different book. लेकिन हमने वो पुस्तक नीचे रखा, दूसरा पुस्तक किताब उनके हाथ में दिया. And if they reject that, we just give them a different book. उसको भी ना बोलेंगे, तीसरा किताब दे दो. And after a while, they just say, okay, I'll take it. तो बाद में बोलते ठीक है दे दो. But there's a lot you can learn. It's not one answer. There are many different ways you learn to do तो this. सीखने के लिए बहुत कुछ है, केवल ये एक ही जवाब नहीं है, लेकिन आप ऐसा बहुत सारा जवाब सीख सकते हैं. Yes. He was supposed to go for a student class right now. After hearing your class, he's ready to come to a book distribution with us. Haribo!
ये हमारे जो प्रभु जी है, छोटा बच्चा प्रभु जी, वो स्टूडेंट क्लास में जाने वाले थे, लेकिन आपका प्रवचन सुन के इधर ही बैठ गए. Okay, so now this book, it's called Our Family Business, The Great Art of Distributing Srila Prabhupada's Books. I wrote it because I was requested by many of my senior godbrothers and godsisters to write the book, and also by the BBT. I wrote the book, it took me a couple of years, and I put a lot of thought into the book, and after I finished the book and it was published, I gave the book to the BBT. It's not my book. I only wrote it because I want to see book distribution increase all over the world. So yes. जो है बीबीटी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, और हमारे बहुत सारे गुरु भाई, गुरु बहन बड़े, उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो अनुभव विचार है आप पुस्तक में लिखिए, और उनके कहने से मैंने किताब लिखा है, पुस्तक लिखा है, और अभी किताब बीबीटी को दे दिया है, तो अभी मेरा किताब नहीं है, बीबीटी का पुस्तक है. So I'm going to get off this stage and I'm going to sit somewhere with these books, and anybody who'd like a copy, they can come up and get a book, and if you'd like, I can also sign it for you before you go. अभी मैं यहाँ पर बैठूंगा पुस्तकें लेकर, अगर किसी को पुस्तकें चाहिए तो ये पुस्तक अगर चाहिए तो ले सकते हैं, और मैं हस्ताक्षर भी करने को तैयार हूँ. Thank you very much for your sincere dedication to Krishna consciousness. Go Premanande, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, Haribo.